गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। वणक्कम, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। आज का ताजा खबर और ताजा सवाल ये है, व्हाट इज पाकिस्तान अप टू। ये पाकिस्तान, व्हाई इज इट अप टू एंड व्हाट इज इट अप टू, विल डिस्कस विद जनरल दुष्यंत। जनरल दुष्यंत, वेलकम बैक टू गना शॉट। बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं आपसे। थैंक यू सर। मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था इस बीच में, तो मिलना कम हो रहा था, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ तो मुझे पता रहता है कि हो क्या रहा है। और इन एनी केस क्रॉस क्वेश्चनिंग होती रहती है दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच में। तो वो होता है करेक्ट। कि जब शंकर ने ये बोला था, आपने उनके प्लेटफॉर्म पे ये बोला था, तो मैंने बोला वो प्लेटफॉर्म अलग था, ये गेस्ट अलग है, तो बात अलग चल रही है। ओके नहीं सर। नहीं, ठीक है। So, today we wanted to speak of Pakistan, but Pakistan is in the backwaters. आजकल पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान इज अ जोक। अगर ह्यूमर इन यूनिफॉर्म चाहिए या ह्यूमर नॉट इन यूनिफॉर्म चाहिए तो पाकिस्तान के बारे में बात होती है। बिल्कुल। But despite the fact that G20 went off well, Canada में जो भी we have had a spat with Canada, Niger killing, ये वो कहानी, uh, economic downturn in China, everything is happening, and a lot is happening in Pakistan also. But एब्सोल्युटली। we can never take our eyes off Pakistan, because the day we take eyes off Pakistan, मान लो कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमें भी पता है, जैसे हम आप आई एम श्योर यू विल पुट अक्रॉस कि पीएफजीए में क्या हो रहा है, उनका बिल्कुल वेस्टर्न बॉर्डर में क्या हो रहा है। there's बिल्कुल unrest, economically they are down. TLP, Tehreek-e-Labbaik Pakistan has started its action, and caretaker government, ये सब everyone knows. But इसका आकार क्या होगा? What are the scenarios building up? That is what we're going to discuss. And how will it affect India? That is what I think we need to discuss. So I'm sure Jan Dushant is eager to start. Please, sir, just start. थैंक यू सर एंड वेरी गुड इवनिंग टू द ऑडियंस। नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को, प्रणाम। थोड़ा सा फीवर वायरल था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाउन हूँ। तो मैंने सोचा अपने एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ शेर कहना पाकिस्तान के ऊपर बड़ा अच्छा होगा इस वक्त, क्योंकि ये सारे जो शेर मैंने लिए हैं वो मिर्जा गालिब के हैं। और मिर्जा गालिब के जो शेर हैं वो इस समय पाकिस्तान पे इतने चुप अचूक बैठते हैं कि आप लोगों को शायद जो मैं आगे बोलने वाला हूँ सारों का जो निचोड़ है ना, वो इन 3 शेरों में है। पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कितना खौफ होता है रात के अंधेरों से, कितना खौफ होता है रात के अंधेरों से, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। अब ये इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट मैंने दी है पाकिस्तान के बारे में, शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर विहीन हो रहा है। ही इज नाउ, इट इज लुकिंग लाइक दैट ही इज लूजिंग हिज हाउस। दूसरा देखिए, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप मुगल एम्पायर की हिस्ट्री देखें, जिसका कि पाकिस्तान अपने आप को डिसेंडेंट बोलता है कि हम वी आर द लेगेसी ऑफ मुगल एम्पायर। जो बहादुर शाह जफर, जब वो अपने आखिरी दिन गिन रहे थे, तो उन्होंने क्या क्या वो शेर कहा था, ये गालिब का नहीं है, बहादुर शाह जफर का शेर है। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन ना मिल सकी कुएं यार में। यानी कि बहादुर शाह जफर was so unlucky that at the time of his death he did not even find a place for his coffin in India, in so called Mughal empire। पाकिस्तान का कहीं ऐसा हाल ना हो जाए। तो ये था दूसरा जो शेर इस समय जो पाकिस्तान की स्थिति को दोहराता है। फिर एक और शेर मुझे याद आया, मैंने कहा आज मैं शेरों में ही बात करता हूँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। मतलब इतनी इनकी चाहते थी कि उनको लगता था कि हर चाहत पे उनका दम निकले, लेकिन अभी भी उनके अरमान बाहर नहीं हुए हैं। अभी भी अरमान है कि पाकिस्तान उठ जाएगा, पाकिस्तान उभर जाएगा, पाकिस्तान पाकिस्तान रियासत मदीना दोबारा बन जाएगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान दोबारा रियासत मदीना बनता है या नहीं बनता है। तो मैं थोड़ा सा अपना पहली स्लाइड को आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि उसमें
अगर आप उसको ला दें, हाँ इसमें देखिए, हाँ, One उसी को ला minute. दीजिए। Yeah, हाँ, आ गया सर, आ yeah. गया, बढ़िया है सर, बढ़िया है सर। तो हमारा सवाल जो था आज का था, व्हाट इज पाक अप टू। मैंने इसमें एक जोड़ दिया, व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि दोनों एक 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 दूसरे के साथ मिले जुले हैं। अनलेस वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, वी विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली ट्रांसलेट कि पाकिस्तान कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है। देखिए, आपने बोला था इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, उसकी सूरत क्या है वो मैं आज बाद में बता दूंगा। टेररिज्म चरम सीमा पर है, इट इज ऑन द पीक। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तो कुछ कहना ही नहीं है। कक्कड़ साहब तो अब यूएन में भी जाके बोलते हैं कि वी कैनॉट डू विदाउट मिलिट्री इन द पॉलिटिक्स। अब इस तरह की स्टेटमेंट अगर आपके एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, देयर इज अ chaos एंड रिबेलियन टेकिंग प्लेस चारों तरफ। जीबी में देख लीजिए, पीओजेके में देख लीजिए, सिंध में देख लीजिए। मेरे ख्याल से अक्रॉस द बोर्ड एक एक रिबेलियन का माहौल है। क्वाजी मिलिट्री टेक ओवर हो चुका है, और ये रीजन था क्वाजी मिलिट्री टेक ओवर विच एक्चुअली स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग इनटू जो हमारे कश्मीर के अंदर गड़बड़ियां शुरू हुई। जैसे अनंतनाग का इंसिडेंट हुआ, एलसी पे कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुआ, रजौरी के पास कुछ एक्शंस हुए पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के द्वारा। तो उसके बाद फिर इन्होंने खालिस्तानियों को भी कुछ एक्टिवेट करने की कोशिश की है कनाडा वाले एंगल से। मणिपुर में भी इनका वाया चाइना कुछ लिंकेज नजर आता है, खास तौर से ड्रग्स के मामले में। जो ड्रग सप्लाई हो रही है, पाकिस्तान जो कर रहा है, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ तो पहले ही आपने देखा होगा, एक पूरा ड्रोन जो था ड्रग्स के साथ अमृतसर में मिला। तो ये कहाँ से आ रहा है भाई? अफगानिस्तान से तो नहीं आ सकता ये ड्रोन, आएगा तो पाकिस्तान से ही आ रहा है। तो इस तरह की जो हरकतें ये कर रहा है टू फंड द वेरियस टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग अगेंस्ट इंडिया is something what he's up to, as far as he's concerned, to divert the attention of his internal public, जो कि बिल्कुल तरस खा रही है। मतलब इस समय पाकिस्तानी पब्लिक का वो हाल है जो कि हम और आप समझ भी नहीं सकते। अगर हम जाएंगे तब शायद समझ में आएगा हमको। तो इसका कारण क्या है? मुझे जहां तक लगता है, देयर आर टू बेसिक रीजंस। फर्स्ट इज, इट इज अ कंट्री which was not needed to be created. It was created basically कुछ लोगों की पर्सनल एम्बिशन के लिए, और जो हमारे सो कॉल्ड ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स थे, वो चाहते थे कि एक फॉल्ट लाइन बीच में क्रिएट कर दी जाए ऐसी, जिसकी वजह से ये जो रीजन है हमेशा एक टर्मोइल में रहे। आई थिंक दीज वर द टू रीजंस व्हाई पाकिस्तान गॉट क्रिएटेड, एंड उसके बाद से उनके उनकी जो मुश्किलें हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं। दे आर कंटिन्यूइंग टू go. I think we can take off this slide, sir. Yeah, Now slide. yeah, we don't want this slide, and so Yeah. we'll continue with the rest of it, sir. So what I'm Yeah, saying before is, let me put one thing. I can't stop myself. You okay, said this is a country which was not meant to be created. Maybe not yes, meant to be created, but I'm very happy it got created. Let me tell you why. ये okay, इसीलिए है कि all the things which we don't want in India have gone there. they are आप facing it. हाँ, आप सोच लीजिए अगर ये सब यहाँ इंडिया में होते तो हमारा क्या हालत होता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। We are talking of a people who think they are descendant from Mughals, but हम्म, otherwise their roots are in Turkey or in Arabia. करेक्ट, हैं तो पंजाबी हैं या सिंधी हैं, so बिल्कुल। they are a confused lot. Why should we ever have them? And thanks, they went there and they're doing what they want, and now we can discuss them. Yeah, yeah. Actually, see, if you look at, that is the other side of the coin. The fact was that they were not to be created. The next thing is that they have been created. Now that they have been created, I am remembering of a Brigadier Saab who came on the national TV channel of India. This was about 10 years back. 10 years, yeah, 10 years back. I was a brigadier at that time myself. So I was hearing this Brigadier Saab, Pakistani brigadier, retired, हमारे जैसे जो होते हैं रिटायर हो जाते हैं, Hmm. तो वो बोलते हैं इंडिया को पाकिस्तान का धन्यवाद देना चाहिए। इंडिया शुड थैंक Pakistan that we are bearing the brunt what they would have borne the brunt. Born otherwise.
I So agree. I agree I with. still, I still agree with you. I agree with you on that particular count, but purely from a perspective of history, Yeah, I think this was a country, because you see, we should not take it only from that perspective. We should take it from the millions of lives which we lost. That correct. was something. Yeah, yeah. That No, was no. something. I just thought I'll sidetrack Yeah. you a bit. That's about all. But let's come to the facts and figures, sir, Yeah, as to yeah, what is happening in Pakistan. So then we'll get to know what are the scenarios likely to be, sir. yeah. First of all, sir, if you look at the economy of Pakistan, enough has been spoken about it. I will highlight two things. One, that Pakistan has now gone into a permanent mode of hybrid governance का उसका एक मॉडल बन गया है. पहले उन्होंने 35 साल के करीब मिलिट्री गवर्नमेंट देखी, फिर एक वो मिक्स गवर्नमेंट कुछ भुट्टो शुट्टो के टाइम पे देखी, शुरू में लियाकत अली खान के टाइम पे थोड़ा सिविलियन डोमिनेंस था. उसके बाद से जब ये जो सिविल को पीछे से कंट्रोल करने वाली गवर्नमेंट बननी शुरू हुई है, जो हाइब्रिड मॉडल, मैं इसको हाइब्रिड मॉडल बोलता हूँ, पाक आर्मी प्रॉक्सी गवर्नमेंट, ये उनके लिए एक बड़ा कन्वीनियंट सा वो हो गया है कि अच्छा काम करेंगे तो पाक आर्मी टेकिंग द क्रेडिट, खराब काम करेंगे तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, they will be packed out of the country or they will be sent to the gallows, whatever it is. It is this kind of a governance which is giving Pakistan uh, some kind of I would say, ability to finger India. Let's put it in that manner. ये जो छोटे छोटे छुटपुट काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएंगे, then they have the potential to damage India uh, More. seriously. So we have to be careful of that point. The second thing is about the economy. सबने बात कर ली है. I mean, I don't want to repeat. I'll give you just three figures. That's all. 40% people below poverty line. 9.5 crores out of 25 crores below poverty line. By That's their scary. standard. अपने स्टैंडर्ड से नहीं, उनके स्टैंडर्ड से. दूसरा सर, 22 IMF लोन लिए हैं इन्होंने. 22 IMF लोन. Every 3 years they take a loan. The debt today is $126 billion. 30% चाइनीज की है. जो 30% चाइनीज की है ना, उसको मान लो 60% है, क्योंकि वो देते हैं 3 से 4 से 5% के इंटरेस्ट पे. इस कंट्री को अगले 9 महीने के बाद सस्टेन करने के लिए फॉरेन रिजर्व नहीं है कि टू गेट थिंग्स बैक इनटू इट्स कंट्री फॉर इट्स पीपल टू सस्टेन. बिकॉज पेट्रोल वगैरह आपको पता है 330 रुपए लीटर चल रहा है. अब आप मानिए इंडिया में अगर 330 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया तो क्या हालत होगा इंडिया में. इंडिया में तो पूरी इंडिया खड़ी हो जाएगी. एनीवे, नहीं कर- so what I'm trying to say here is, sir, नहीं नहीं, 1 मिनट पेट्रोल के बारे में बोल दिया तो मैं भी बोलता हूँ. अगर अच्छा, पेट्रोल 303 रुपए हो गया इंडिया में तो इंडिया खड़ी भी नहीं हो जाएगी, गवर्नमेंट बदली हो जाएगा. गवर्नमेंट बट बदली हो जाएगी. पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ही नहीं है बदली होने के लिए. तो बिल्कुल, चलता है बिल्कुल. उधर. वो तो हाइब्रिड मॉडल है, एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर लगा रखा है, लोग जूता मारेंगे उसको मारेंगे. लेकिन 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 सर, मुनीर क्या कर रहा है, ये देखना हमको बहुत जरूरी है. इसीलिए पता चलेगा कि व्हाट इज पाकिस्तान अप टू. मुनीर हैज या गॉन मुनीर हैज गॉन टू सऊदी अरेबिया रिक्वेस्टिंग फॉर $25 billion. He has gone to UAE requesting for $10 billion. टोटल करते जाइए सर, 35. कतार 35. फॉर $25 billion, $55 billion. Hopes to pick up $75 to $100 billion from the Middle East. That is Pakistan up to. So we need to deny this. ये जो हो रहा है हमारे देश के लिए, जो जरूरी चीज है कि ये जो स्पेस से अपने को बचाते आ रहा है, इस स्पेस को उसको कम करना पड़ेगा. एंड दैट इज वेयर आई थिंक जो एग्रीमेंट G20 के बाद वगैरह हुए हैं, जो हम I2U2 या का वो जो तो एग्रीमेंट, या तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है, वी हैव टू, बिकॉज ही एंजॉयज अ वेरी गुड सपोर्ट विद द मिडिल ईस्ट एंड आल्सो विद द यूएस पेंटागन. ये दोनों के साथ इनका जो पाक आर्मी का जो रिलेशन है, और टर्की टर्की के साथ, इन तीनों के साथ इनका जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छी है आर्मी वालों की. तो उसकी वजह से इनको जो सस्टेनेंस मिल रही है ना, वो उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. देन ओनली दे विल बी इनवर्ड लुकिंग. अदरवाइज ये आउटवर्ड लुकिंग हो जाएंगे. और जैसे जैसे आप थोड़े बोलते रहते हो कि पाकिस्तान विच इज इनवर्ड लुकिंग इज बेटर फॉर इंडिया इज देन पाकिस्तान लुक या which is विच looking इज outward. आउटवर्ड And लुकिंग.
So this is the hypothesis. I mean, this is the proof of that. I'm trying to say that we need to deny that, sir. अब आप दूसरा देखिए सर, इन्होंने अपने पैर पे अपने आप कुल्हाड़ी मारी है. अफगान रिफ्यूजीज को ये वापस कर रहे हैं. 1 million refugees, they are saying that they will be sent back. Sent back. Repercussions क्या होंगे सर इसके? That entire western border will be in flames. That's all. Simple as that. That will be in flames. तो जो सिन्योरे बिल्डिंग की बात हो रही थी, आपने भी कुछ दिन पहले मेरे से कुछ पहले शेयर किया था मुझसे, उसमें ये फैक्टर भी डालना जरूरी होगा कि इनका कहीं वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो इस तरह ना हो जाए कि ये दे बिकम एब्सोल्युटली west focused. Good for India, good for India. How will they manage it is something which we have to watch out now. So we have to see कि पाकिस्तान का गेम क्या है इनको वापस करने के लिए. मैं इसके ऊपर काफी वो सोच विचार कर रहा हूँ कि भाई क्यों कर रहे हैं ये वापस, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम इनके ऊपर होगी. इससे कुछ, हालांकि इकोनॉमिक फैक्टर अभी लग रहा है एक मेजर रीजन है, क्योंकि इनको खाना खिलाना पड़ रहा है, इनको दवा देनी पड़ रही है, वो करना पड़ रहा है, तो ये लोग they are eating the resources of Pakistan. But will it lead to some kind of a war? Some kind of a war That's with the point. Afghanistan? That's That is the something issue. so that we is have another factor which we have to keep a watch on and see what will be the impact on India, sir. Because फिर ये चारों तरफ भागेंगे sir. Afghans then will run all over, and India also has a fair amount of, not too many, but कुछ है हमारे पास भी refugees हैं but India we में. have to be careful about this whole story. एब्सोल्युटली सर. नेक्स्ट अगर आप देखें सर तो ईद उल मिलाद हुई थी कुछ दिन पहले, प्रॉफिट का जन्मदिन था, बिग बिग इशू. बट ऑन दैट डे यू हैड सीरीज ऑफ अटैक्स. Yes. 160 people killed in all those 4 attacks. 2 in KPK, 1 in Afghan border, 1 in Balochistan. एंड उसके पहले आपने चित्राल का अटैक देखा होगा, अगेन अगेंस्ट द armed forces posts and also. So what is happening? I mean, is there something more than what we are seeing? Is it only खाली TTP है, या कोई अलायंस नाउ बिल्ड हो रहा है पूरे वेस्टर्न फ्रंट पे, बलूचिस्तान के BLA के बीच में, TTP के बीच में? और मैं तो एक स्टेप और आगे गया हूं इसमें, और मैं ये बोल रहा हूं कि कहीं जो चित्राल वाला जो इंसिडेंट है, आई होप इट इज नॉट गेटिंग लिंक्ड टू द नॉर्दर्न अलायंस आल्सो. One never knows, because आजकल कुछ भी नहीं कहते, because चित्राल इज ऑन द बाउंड्री ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान, और वहां से जो इलाका जो जाता है वो सारा फिर उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और फिर उज्बेकिस्तान उस तरफ मूव करता है. तो इनका कहाँ से क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा. आई थिंक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस डेवलपमेंट, अदरवाइज वी विल सडनली गेट सरप्राइज्ड. So that is the next issue which we need to say. The terrorism is something which is not seen like this in the past. Today, the governor of Balochistan has declared in dawn that this much and no more, as far as Balochistan is concerned, we are going to do a hard crackdown. अब हार्ड क्रैकडाउन का मतलब ये हुआ उतने ही और BLA फाइटर्स बनाएंगे ये, उतनी ही और there will be more such attacks taking place. So we need to be we need to be watching this very closely. How can we sort of use this for our advantages? Then I am also, I mean, I also want to highlight here that the protests in POJK और ये जो सिंध वगैरह में हो रहे हैं, ये इंटरनल से ज्यादा जो एक्सटर्नल फैक्टर है, द डेवलपमेंट इन JNK जो हो रहा है हमारे इंडियन पार्ट ऑफ JNK में. अगर आप लाइट्स का भी देखो, वो जो हम GDP दिखाते हैं, तो Right. इंडियन JNK इज ब्राइट, and Pakistani JNK is Pakistani Dark. occupied POJK is bloody dark. गिलगिट बाल्टिस्तान में देखिए कुछ दिन पहले हुआ था, 15 लोगों को मार दिया है रेंजर्स ने यहाँ पे. उसी तरह से सिंध में भी रेंजर्स ने मारा है प्रोटेस्ट के अगेंस्ट. तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंडिया इज नाउ कमिंग टू द लोकल पब्लिक एज सम काइंड ऑफ अ वाइट मॉडल अगेंस्ट द पाकिस्तानी. इसीलिए मैंने कहा था दिस कंट्री वाज क्रिएटेड with that country was not required to be created, and people are probably now feeling it. मेरा कहने का Yeah, मतलब I mean, आपने ये बोल दिया कि POJK and JNK and Gilgit Baltistan के बारे में. I think you made a very important point. I want to highlight it. देखिए, Yes. all this development which is happening in JNK is being seen Correct. on the other Correct. side.
So there's a pressure cooker kind of a situation happening on the other side. Ki bhai, India is developing that part of J&K. We are here with Pakistan, so we cannot, we are not developing. And in fact, we'll not develop. The same thing for Gilgit-Baltistan. So for the first time, probably in all these years, we've seen some issues coming up. If these issues are coming up, there are two things which can happen. Pakistan can externalize uska jo, that indication we are getting is through this Kulgam, Anantnag infiltration kind of a thing. And the second thing is there might be crackdowns inside there. Absolutely. And unrest in this area. Right. Now, if there is unrest in this area, I mean, the point which I'm going to take it further is that we also know there's a lot of commitment of CPEC along in Gilgit-Baltistan. Absolutely. So the Chinese are involved. The Chinese are involved now, right? The Chinese are involved. So there's going to be a little mess coming up over there. And the fact जो आपने बोला चित्राल में जो हुआ था और गिलगित-बाल्टिस्तान से कनेक्टेड है और इसका जिंजियांग का प्रॉब्लम्स भी हैं. So I think that is heading into a flashpoint. बिल्कुल सर. So absolutely right sir, जो आपने highlight किया है, that was the major issue. Next, if you see sir, even Baluchistan में Anwarul Haq Kakkad, the Prime Minister, acting Prime Minister of Pakistan, continues to deceive himself. Openly says UN General Assembly में कि 50 लोग ही खाली बलूचिस्तान में मिसिंग हैं, जबकि सबको पता है कि 40 से 50 हजार लोग जो हैं उस इलाके में they are just gone, disappeared, right? So इसका जो implications है, the public of Baluchistan is getting more and more now inflamed with this kind of an acting prime minister जो कि उनका आदमी है. He was supposed to be a Baluch, although he's not although he's a Baluch. I mean, he's an establishment man. Yeah. So, but the fact is he's from Baluchistan, so that will turn around on its head. So मेरे ख्याल से Baluchistan and KPK, especially जो lower KPK है ना, lower KPK, I mean southern KPK and Baluchistan, कोयटा वगैरह का इलाका जो है, ये जो इलाका है, ये गर्म होने वाला है अगले कुछ दिनों में. और इसके जो रिपरकशन होंगे, सिनारियो होंगे, वो अलग आप डिस्कशन करिएगा, आपने मुझसे शेयर भी किया है. आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग episode to look forward to, and I don't mind joining that. In fact, probably the next episode we'll see what are the three options of Pakistan against that thing. Will they attack? That's a very good scenario building thing. We will unfold it. We'll talk about it a little later. Yeah. So next जो बड़ा इशू चल रहा है सर, ये इस पे लोगों को बहुत कम ध्यान गया है. I read an article, of course it is from a Strive member only, and he writes regularly for Eurasian Times, Nilesh Covert. उन्होंने लिखा है, you read his article. This is about the gap between judiciary and the Pak army. अभी क्या हो रहा है सर कि people thought कि जब ये चला गया, बडियाल चला गया है, तो अब वो नया आएगा, फैज आएगा, तो फैज will get things going in favor of Pak army. फैज ईसा नाम है सर, फैज ईसा. So ईसा साहब, बट ईसा साहब की जो रेपुटेशन है, he is a plain speaking man. He goes by the rule. He has taken decisions against the Pak army, against the establishment whenever it has come to the protection of the constitution. He says मेरी duty है to protect the constitution. So we are likely to see more of a rift between the judiciary and the Pak army, and this we need to watch very carefully, because what you're saying is very important, because invariably Pakistan में जब भी politics होता है, सत्ता बदलता है, कोई बड़ा चीज होता है, उसके तीन हिस्से हैं, एक आर्मी, एक जुडिशरी और एक पॉलिटिशियंस. इन तीनों में two have to be together. ठीक है. अभी are we heading into a situation where the Pakistani army and the politicians are going to get together against the judiciary? फिर कुछ और वहाँ, the point which you're making, I'm just reinforcing what you're saying. Correct. So उस तरह की कोई कॉम्बिनेशन बन सकती है, या फिर ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास दो कंपल्शन होते हैं सर. एक तो होता है कि भाई उसका खुद का सर्वाइवल, दैट मींस इट विल जॉइन हैंड विद द आर्मी.
The second compulsion is the people, because ultimately वोट तो लेने हैं ना उसने, चाहे वो फर्जी Yeah, वोट ही yeah. लेने पड़े, कुछ तो वोट तो लेने ही है उसने. तो that is why you find number of parties are redefining themselves. Tehreek-e-Labab Pakistan is now opposing the elections in winters as far as KP and Baluchistan Other is places are concerned. concerned. Similarly, जो अगर आप इधर देख रहे हैं तो एक नई पार्टी खड़ी हो गई है. अच्छा, दूसरा जो चीज है, इकोनॉमी इतनी बुरी हालत में है, इलेक्शन कराएंगे तो पब्लिक वोट कहाँ देगी इनको. तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर जुडिशरी अलग हो गई, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट अलग हो गया, पाक आर्मी गेट्स आइसोलेटेड, रेवोल्यूशन न हो जाए कहीं, बिकॉज इफ होने दैट के हैपेंस, अंदेशा है. अंदेशा है. तो वी शुड कीप अ वॉच ऑन दैट रेवोल्यूशन फैक्टर, बिकॉज अगर वो हुआ, then I think the situation becomes very difficult to control, even for external borders. अफगानिस्तान की तरफ हो, चाहे इंडिया की तरफ हो, चाहे सी की तरफ से जा रहे हो, it will be a So it will that be a means ये जो तहरीक लबैक का मूवमेंट जो हो रहा है हाँ जी सर. अंदर पिछले 4-5 दिन से, ये आफ्टर ऑल तहरीक लबैक मूवमेंट वाज द वन अगेंस्ट ब्लास्फेमी. और ब्लास्फेमी करेक्ट, के चक्कर में वो श्रीलंकन को एक श्रीलंकन मैनेजर को मार दिया, आई थिंक दे हंग हिम और व्हाटएवर दे डिड. किल एंड देन दे हिम, आर नाउ दे किल्ड हिम. एंड देन अभी ये माइनॉरिटीज के ऊपर अगेंस्ट दे हैव गॉन इन अ बिग वे, राइट. करेक्ट, एंड if the ruling, they are up in the court also, agar if the judgment goes against them in many issues and they follow to the army, करेक्ट, then there is a problem going, because that's Tehreek Labbaik is quasi political, quasi more religious. मोर रिलीजियस. एंड So ऑल्सो सर, जो सिविल में ट्राई करने की कोशिश कर रहा है पाक आर्मी, अगर वो वो डिसीजन अगेंस्ट हो गई जुडिशरी की, तब बहुत चांसेस वो हैं तो इसके. वो बहुत chances हैं. So he might have just sidelined Imran Khan and brought another problem into himself. So I करेक्ट सर, think जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान, what is Pakistan up to? करेक्ट सर, So that we have defined three movements. One POJK, Baluchistan. One is the Western problem they have along the Durand line, generally करेक्ट. KPK say. And third is internal with Tehreek-e-Labbaik. And of course, fourth apex is their own internal power struggle. And ये कंगाल देश में ये सब कुछ हो रहा है. So the अब question is, अब इसके अलावा सर yeah, एक yeah, चौथा एंगल, पांचवा एंगल में डाल देता हूँ, देन वील गेट द फुल पिक्चर. पांचवा yeah, एंगल है एक्सटर्नल एंगल. अब yes, एक्सटर्नल एंगल में आप देखेंगे चाइना की क्या हालत है. चाइना इज वरीड नाउ. चाइना ने yes, अफगानिस्तान को बोला है, भाई केपीके को अपने में मत मिलाओ. दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच दे हैव रिक्वेस्टेड correct. अफगानिस्तान. What does this indicate? That there is a strong Pashtun movement taking place across the borders there. Second thing, what they have done, sir, this entire Gilgit Baltistan और POJK का जो northern इलाका है, that is now under unrest. It is a double danger for China. एक तो जिंजियांग का तो प्रॉब्लम तो है ही है, उसके अलावा सीपेक की प्रॉब्लम. सीपेक उसका मैं कुछ एक दिन पहले कुछ एक प्रोग्राम सुन रहा था किसी चैनल पे, अच्छा प्रोग्राम है, टी गुरुज का प्रोग्राम है. उसमें उन्होंने बोला कि चाइना इज नॉट इंटरेस्टेड इन सीपेक. तो मुझे उस पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि आई डोंट थिंक इन चाइना विल सो इजीली लीव सीपेक, No, no, बिकॉज 37 बिलियन तो डाल ही चुका है. ओवरऑल प्रोजेक्ट तो उसका 60 कुछ बिलियन का है, 66 बिलियन का है. और अब कितना होगा वो भी पता नहीं है हमको. ग्वादर में पोर्ट बन ही चुका है, कैसे उसको छोड़ेगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर चाइना टू विड्रॉ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इस no, out इलाके. of question. You know why? I mean, let's be very clear. If China doesn't get hold of Gwadar, करेक्ट. he doesn't get hold of, I mean, the Middle East deal, Iran, खत्म. Saudi deal, वो सब ईरान खत्म से अफगानिस्तान से लिंकेज खत्म हो जाएगी सर. खत्म हो अफगानिस्तान जाएगा. तो वो कैसे and जाएगा. everything depends on how. अच्छा, उसका जो मैरिटाइम ambitions हैं कि he बिल्कुल, should be a maritime power. If he doesn't get Gwadar, Gwadar is his only base besides Djibouti. बिल्कुल, बिल्कुल. सो He'll, सो so मुझे I मुझे नहीं doubt लगता कि that is a, बिल्कुल सर, मुझे नहीं लगता कि वो चाइना छोड़ेगा इस इलाके को no, इतनी no, out आसानी of से. question. दूसरा है कुछ लोग बात कर रहे थे कि कुछ दिन पहले रशिया ने अपना दूसरा शिप भेजा था एलपीजी का पाकिस्तान में. सो रशिया इज नाउ काइंड ऑफ Coming into the angle. shaking hands of Pakistan. I don't think so.
it is possibly just doing its transactional वो कर रहा है अपनी इकोनॉमी को अफ्लोट रखने के लिए रशिया इज डूइंग समथिंग बट वी नीड टू कीप अ वॉच कि रशिया क्या कर रहा है इस रीजन में क्योंकि अगर इससे ज्यादा कुछ करता है देन वी हैव टू बी अ लिटिल गार्डेड एज फार एज guard बिकॉज against that. पाकिस्तान तीसरी जो चीज जो वो एक्सटर्नल एंगल में जो कोशिश कर रहे हैं दे आर ट्राइंग टू से दैट दिस इज गॉट एन एक्सटर्नल एंगल एंड दैट इज द सीरीज ऑफ किलिंग्स व्हिच आर हैपनिंग ऑफ टेररिस्ट्स इन पाकिस्तान जिसको कि ये लोग डिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया के रॉ कर रही है हाफिज सईद का बेटा को मार दिया उसके पहले एक टेररिस्ट को मारा था तो ऐसे तीन चार टेरर फिर वो उसको मार ही दिया था उन्होंने पंजवार को तो इस तरह से खालिस्तान के जो लोग थे उनके सपोर्टर्स को मारा गया तो वो कहीं ना कहीं एक एंगल है विच दे शुड नॉट इफ दे ओवर प्ले दैट पॉसिबली खुद मार के वो कर रहे हो कि भाई ठीक है दीज गाइज आर ऑफ नो गुड यूज टू मैन और बीस्ट इनको उड़ा दो और अदरवाइज शरेआम इसको उड़ाना इतनी आसानी से और फिर उसके बाद नथिंग हैपनिंग नो ट्रेस इनका कोई वो नहीं मिल रहा सुराग नहीं मिल रहा आईएसआई को पता नहीं चलेगा कि किसने मारा इनको तो मेरा कहने का मतलब है कहीं ये स्टेज मैनेज तो नहीं कर रहे हैं दिस कुड आल्सो बी वन ऑफ द रीजंस दैट दे आर देमसेल्व्स बमिंग देम ऑफ बिकॉज दे आर रियली ऑफ नो मेजर यूज अगर बम ऑफ करना है तो हाफिज सईद को करते हैं हम why should we और दाऊद इब्राहिम को करते why should we bum off a chap हाफिज सईद के खुद 9-10 लड़के हैं एक लड़का गया तो दूसरा लड़का खड़ा हो जाएगा उसका so I think we need to be careful that they are trying to divert the attention of their public by focusing on India some kind of an I, Indian I have a view on this, Dushyant. yeah I think go this ahead. is all the tail end of that Niger killing. Correct. The way I look at it, the ISI might have actually bumped him off, and to prove that India is doing it, they've bumped off a few minions within Pakistan, and now they'll put the blame on India and say that the whole thing is now being shown. The narrative is being formed that India is the one which is doing all this. Correct. And the Right? last part of and the last part of the external thing is that it is becoming more and more clear now कि अफगानिस्तान इनके इन्फ्लुएंस से बाहर हो गया हकानी नेटवर्क को छोड़ करके मसूद का नेटवर्क जो है या फिर वो कतार वाला नेटवर्क दोहा वाला जो नेटवर्क है वो इनके इनके कंट्रोल से बाहर है बारिंग हकानी नेटवर्क सो इनको अब अफगानिस्तान में अपनी वो करने के लिए पाकिस्तान को काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी टू इंश्योर दैट अफगानिस्तान इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम सो एक्सटर्नली आल्सो पाकिस्तान इज लुकिंग एट एन आइसोलेटेड स्टेट यूएस का थोड़ा सा अभी हमको समझना जरूरी है इसमें कि यूएस ने अभी सडनली इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है पाकिस्तान में 2 बार उसका एम्बेसडर गिलगित बाल्टिस्तान और इधर उधर घूम के आया है मुझे लगता है ये सिर्फ चाइना यूएस का जो स्पेस कंटेस्टेशन है कि हु शुड बी इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान वी शुड लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव उससे ज्यादा हमको इसको देखना नहीं चाहिए मुझे नहीं लगता कि आई मीन एनीथिंग बियॉन्ड दैट कि ये इस स्पेस No, को कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ाई है I agree with you there that the major thing as far as US is concerned is between USA and China. इसमें दो राय नहीं है. But the way this fellow went to POJK, ये पहले भी गया है, and the developments of the Niger killing in Canada, अगर आप जोड़ोगे, somewhere is there a message coming to us? That's right. USA, Pakistan, and Pakistan's narrative is being played through US. Possible है बिल्कुल. The point is, अगर आप ये Dawn या Pakistan Today, if you had seen in the past 2 weeks, every article is, India is doing this, India is doing that, and India is, complete, as if only Hindutva is going here. Democracy is up in the grabs. Authoritarianism, as if Modi is a dictator, better, it is the way Prime Minister Modi is a dictator, which is rolled, into one of Xi Jinping and all other dictators in the world. Us tarike se they are showing the narrative, right? Correct. And it is possible. You see, we have to grant Pakistan one thing: कि ये narrative में masters नहीं है.
हाँ, no doubt, no doubt. No doubt. And they have a good influence. They have a good influence in The USA, US, yes, right? And they have इन्होंने इन्हीं की वजह से खालिस्तान मूवमेंट जो है जो एक्सपोर्ट हुआ है कनाडा में और बिल्कुल सर, यूएसए में. आफ्टर ऑल सेफ पैसेज तो इन्होंने ही दिया है. और जिस बिल्कुल, तरीके से ड्रग्स आर कमिंग इनटू पंजाब, इनका हाथ है. करेक्ट, ओके, करेक्ट, सो इफ आई एम टू से कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दे माइट गोली खिला सकते हैं यूएसए को and start creating problems. I don't see problems more in J&K. I see problems in Punjab. yes, At this point of time, I see more problems of Pakistan in Punjab than in J&K. Because correct, sir. J&K So में इनका they're we quite cannot rule out. We yeah, we cannot rule cannot out rule the out. US. We cannot rule out the US. Although, mind you, primary reason is US-China contestation, but like you said, US cannot be trusted so easily. So therefore, Easily. it wants to keep everybody a little, what do you call that? वो टेंटर हुक्स पे रखना चाहता है On सभी को. yeah, I agree with you. On that. And आपको वो पता भी है, like you said, that they've got about 4,000 groups, Pak lobby groups in US. India has about US. 7 8. India has only 7 8 in the US. आज की news है sir, today's news is that the US Congress has passed the bill for aid to Pakistan. Yeah. Pakistan, Yeah. and the guys who had raised the bill to oppose it were possibly from the Indian lobby, and they lost quite handsomely. Yeah. 136 were only, and 200 and something in support, in against the bill. So what you are saying may be right, that there is some kind of a movement उधर भी बन रहा है to put India under some kind of a, and उसमें जो Pressure. शेली शीला समथिंग उसका नाम है, जो सेनेटर थी जिसने ये मूव किया था, जिसने अपोज किया था. शी वांटेड दैट पाकिस्तान शुड कंटिन्यू टू, शीला जैक्सन आई थिंक, दैट Yeah. द एड शुड कंटिन्यू. उसमें वो बड़ा सा एक लाइन का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, वी मस्ट कोऑपरेट विद डेमोक्रेसीज लाइक पाकिस्तान. आई मीन, किस एंगल से पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, मुझे तो समझ में नहीं आया कि अगर पाकिस्तान को डेमोक्रेसी बोलता है और इंडिया को, जैसे आपने बोला, डिक्टेटरशिप और इस तरह की बात करते हैं, आई थिंक देयर इज डेफिनेटली समथिंग मोर ब्रूइंग देन व्हाट मीट्स द No, आई. no, we cannot let our guard down in this. ये हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत शक्ति है, ये है, वो है. One fine day you might be staring at a situation at a करेक्ट, huge embarrassment, and this might. You see, at this point of time, the way I look at it, I think USA has backed off from Canada. करेक्ट, But let's not count USA out in this whole game. या That एब्सोल्युटली, they have taken this whole thing, this thing. वो वक्त पे आने पे they will strike back. इसमें मेरे को डाउट नहीं है. तो यहाँ सर, राइट. यहाँ पे मैं फिर यही बोलूंगा सर, रियासत मदीना ढह रहा है, संभालना है तो जल्दी से संभाल लो. और अगली स्लाइड दिखाएंगे, मैं बता रहा हूँ कैसे ढह रहा है. तो जस्ट यू कैन शो दिस स्लाइड. या ये जो स्लाइड्स आपके सामने दिख रही है, इसमें मैंने तो मैप लगाया था इंडिया का, कि इंडिया का कौन सा फुल मैप है, बट आई थिंक वो जब वो लोड किया तो वो आउट हो गया है. एनीवे, सो यू ऑल नो दैट इंडियाज मैप इज इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान एंड अक्साई चिन, ऑल दैट इंक्लूडेड इज इंडियाज मैप. सो इसमें अब आप देखेंगे, एक्चुअली पाकिस्तान में हम खाली 5 बड़े हिस्सों की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतने सारे हिस्से हैं छोटे छोटे, जिनकी कभी ना कभी डिमांड रही है अपने को पाकिस्तान से अलग रखने की. तो ले दे के जो पाकिस्तान रह जाता है, वो सिर्फ वो है फैसलाबाद, मुल्तान, ये जो इलाका है, यही पाकिस्तान रह जाता है. बाकी सारे जितने रीजन्स हैं, ये सब इधर उधर बिखर रहे हैं. लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इनको छोड़ करके बाकी सब बिखर रहे हैं. गिलगिट बाल्टिस्तान, मर्दान, चित्राल. चित्राल तो आप मान के चलिए, चित्राल तो इतना, एक्चुअली उसका ओरिजिन तो हिंदी कैलाशी से, हिंदू ओरिजिन था उनका, वो बाद में कन्वर्ट हुए हैं. तो वो तो बेचारे वैसे ही उसमें ज्वाइन किए हैं, दे हैड नो ऑप्शन. अगर उनका बस चला होता तो उस समय दे वुड हैव जॉइंड इंडिया. एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज सर, कि हर किला इनका उखड़ रहा है. तो इसके बाद क्या हो सकता है, सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, हम सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज टाइम खत्म हो गया है. सिर्फ आपको बता सकते हैं क्या होगा.
ऑप्शन 1 है कि सिंपल बाल्कनाइजेशन हो जाए, 5 ग्रुप्स में एक बाल्कनाइजेशन हो गया, सब अपने अपने इंडिपेंडेंट है, पाकिस्तान बीच में अलग हो गया। ये कॉमन है, ये चारों तरफ डिस्कस हो रहा है, इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन ऊपर वाला जो इलाका है वो पूरा चित्राल तक इंडिया के हिस्से में आ गया, मुझे ये लेस लाइकली लगता है। उसके रीजंस हैं। अफगान दूसरा जो ऑप्शन है जिसमें कि अफगानिस्तान पूरा ये केपीके ले लेता है, पश्तूनिस्तान जो बोल रहे हैं बात करें, वो पूरा एक मर्ज हो जाता है, जिसके ऊपर चाइना ने पहले ही पाकिस्तान को अफगानिस्तान को बोला है भाई इस तरह का कुछ मत करो कार्रवाई आप लोग, क्योंकि फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, और लड़ाई शुरू होगी तो चाइना विल हैव टू टेक साइड्स विद पाकिस्तान, एंड देन आई थिंक ग्रेट वॉर विल बिगिन, बिग गेम विल बिगिन। जो पहले अब चाइना इज ट्राइंग टू अवॉइड दैट बिग गेम ना। अब रशिया ने, इंग्लैंड ने कर लिया, यूके ने कर लिया, रशिया ने कर लिया, अमेरिका ने कर लिया, अब बारी आई है चाइना की। चाइना की। वो वाला गेम ना शुरू हो जाए। दूर की है, वाइल्ड कार्ड है, बट पॉसिबिलिटीज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा, बट पॉसिबिलिटीज आते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन जो मुझे लगता है कि ज्यादा ज्यादा जो इस समय वो है कि गिलगिट बाल्टिस्तान कंटेस्टेड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर कुछ होता है, अगर इंडिया कुछ ये मिलना भी चाहे अगर इंडिया से, जो बोलते हैं ना कि कारगिल चलो और ये वो होता है, तो ये कंटेस्टेशन हो जाएगी यहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में, अगर कुछ इस तरह की हरकत होती है। तो दैट इज अ मच मोर पॉसिबल लाइकलीहुड। रेस्ट ऑफ इट इज पश्तूनिस्तान, बलूचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ सिंध विल रिमेन एज इट इज। इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, बहुत पहले एक डिमांड आई थी सिरिकिस्तान की। ये कुछ कम लोग, Saraiki, yeah. The area सराइकिस्तान, between Saraikis, yeah, एरिया बिटवीन सिंध एंड पंजाब, and सिंध एंड Punjab, नॉर्थ Fort Abbas पंजाब। के नीचे, Fort Abbas के इलाके में। बिल्कुल, तो इसमें क्या है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स केपीके की हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट पंजाब की हैं, और कुछ इलाका सिंध का, ये मिला करके एक इनका अलग से एक डिमांड थी। हालांकि ये डिस्टेंट शॉट है, बट सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इस तरह की चीजें भी हैं पाकिस्तान में जो भी छुपी हुई हैं, अंदर दबी हुई हैं, लोग बड़ी बड़ी बातों में जा रहे हैं। तो ये 3 सिनारियो हैं, इसके अलावा और भी मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना डिस्कशन, मतलब मेरी जो आज की जो वो थी वार्तालाप, या जिसको बोलिए कि व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, आई हैव फिनिश्ड हियर। व्हाट आई एम अल्टीमेटली वी आर सेइंग इज दैट पाकिस्तान will try something to deflect from all its problems what it is having. So we need to be careful what is Pakistan up to Up to, yeah. as far as So, India. okay, let's. आपने जो भी बोला है, let me quantify what is Pakistan capable of doing and what Pakistan can be up to. We have discussed Yeah. it. I'll just quantify it. Yeah. One, it can, you know, heighten the issue in J&K by, internally in J&K and something along the LC. Well, that is a standard option. The second option, जो मैं देख रहा हूँ, what Pakistan can do is inside Punjab. So Punjab का problem, they can internationalize it the way it is being done and create problems for us. Narrative Right? strong होगा. Narrative war, which will put us on the back foot. We already, at this point of time, हम back foot पे नहीं है, but we can be on the back foot for this. Yeah. The third thing is extension of this narrative war. They will have to play this narrative with USA to put us on the back foot. Absolutely. Okay. The fourth thing जो आपने बोला है, the fourth thing which आपने बोला है कि they will go, ये जो मिडिल ईस्ट में या सऊदी में या कतार में या कुवैत में या तुर्की में या ईरान का भी पैर पकड़ सकते हैं कि get investment into Pakistan to revive itself, and part of that revival will be directed against India. So that is the next option which they have. And of course there's another option which is there inherent, जो आपने बोला है कि create some chaos and ignite Gilgit in a manner to involve China there. Absolutely. Right? The moment China gets involved, then we are in our own, you are in a different kind of a ball game. And it's a dilemma. It's a dilemma for us. It's a dilemma for us. Because then your northern borders get extended. You might not have a two-front situation, but you are going into something unknown.
Correct. इनफैक्ट ये ओके एंड ऑफ कोर्स हम वेरी इजीली हम बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान विल गेट इन्वॉल्व इन द वेस्टर्न बॉर्डर एंड वी विल बी लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर, बट उसका ब्लो बैक क्या होगा हमें अभी तक पता नहीं है, राइट? आई थिंक वी हैव there are about 6-7 scenarios. Yeah, none of these scenarios probably lead to war, Yeah. but all these scenarios demand some response from us. It demands preemption from us कि हम यही सिनेरियोस हैं, किस तरीके से हम ब्लॉक कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिएम्प्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रोएक्टिव भी हो सकते हैं. प्रोएक्टिव इज नॉट नेसेसरली थ्रू आर्मी, इट कुड बी इकोनॉमिक, इट कुड बी आई मीन उदाहरण के तौर पर ये आईमेक जो है, आईमेक मैं इज बोलने वाला था कि चाइना के साथ हाँ मिल बोलिए. करके, चाइना या और मिडिल ईस्ट के साथ मिल करके अगर ये आईमेक को डाउनग्रेड करते हैं, जैसे कि हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी आगे कुछ चला नहीं है ज्यादा, तो कहीं ना कहीं चाइना विल बी इंटरेस्टेड दैट पाकिस्तान यूजेस इट्स गुड ऑफिसेज टू एंश्योर दैट आईमेक डजंट टेक ऑफ. इफ इट डजंट टेक बट ऑफ देन मिडिल ईस्ट की जो उसकी जो पकड़ है वो बरकरार रहेगी चाइना की. वो थोड़ा मुश्किल है. मैं इसीलिए मुश्किल बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अंदेशा है अगेन, because आजकल मैं I've done a lot of research on IMEC ever since it announced, and I've had ओके. to write a major researched article for a journal. ओके. What उसमें जो निकल आता है कि IMEC का जो नींव है ऑलरेडी इट्स लेड आउट, खुदा हुआ है. खुदा हुआ है. एक तो ये जो चारों कंट्रीज, पांचों कंट्रीज हैं, इन सबको चाहिए आईमेक. ये इनके इंटरेस्ट में है कि आईमेक आए, वेदर इट इज यूएई, सऊदी वगैरह वगैरह. और मेजर 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 इशू क्या है कि सऊदी अरेबिया यूएई में ये मैं अभी क्या है कि आई एम नाउ कोटिंग और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर व्हिच आई ही स्पोक इन हडसन इंस्टीट्यूट इन यूएसए दैट ड्यूरिंग कोविड the Middle East has realized that their food security is dependent on India. And this I2U2 has made tremendous headway in the food security corridor. ये जो IMEC के जो बेसिक थिंग है, एक फूड कॉरिडोर है, इजराइल यूएई इंडिया का फूड कॉरिडोर, एंड दैट फूड कॉरिडोर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दैट ऑलरेडी. एक बार ये फूड कॉरिडोर we are already doing it. We are already doing it. Exporting it. Yeah, exporting it. The second thing, which is for which the UAE needs India, UAE, Saudi Arabia, and everyone needs India, is for that energy. इनके एनर्जी के लिए, खास करके जो ग्रीन एनर्जी या ग्रीन हाइड्रोजन के चक्कर में घूम रहे हैं, इंडिया के बिना वो पूरा नहीं होगा. So I'm actually quite confident that IMEC will become a success, and IMEC will outflank this, CPEC. मेरा हिसाब है ये, मेरे हिसाब से. But in this business of one corridor outflanking the other, blowback will be here. Yeah, that and is the point. Also, I also feel sir that कि इसमें एक और फैक्टर जो हमको कंसिडर करना पड़ेगा IMEC की सेफ्टी के लिए, and for which we need to have a strong diplomatic means Outreach. to deny that kind of a thing, and that is that जो टर्की वाला जो एंगल है, जो टर्की को हमने बाईपास किया है, and we have gone to Greece, and we know Greece टर्की के बीच में क्या होता है. So that angle we have to take care of, because Turkey is also developing a corridor directly for itself from the Middle East. So वो फैक्टर जरा हमको ध्यान में रखना पड़ेगा. नहीं, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो. ऑलरेडी एर्दोगान हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से देयर कैन बी नो कॉरिडोर टू यूरोप विदाउट टर्की. That's right. तो ये हाँ, नो विदाउट टर्की. एंड अगर वो है तो आई एम सॉरी वी आर गोइंग फ्रॉम पाकिस्तान इनटू दैट एरिया, बट आई थिंक इसका कनेक्टिविटी है. अगर ये लिंक्ड ऑल लिंक्ड, अगर वो कनेक्टिविटी हमें समझ में नहीं आता तो व्हाट पाकिस्तान अप टू विल नेवर नो. सो इफ and Greece, after all, Turkey and Greece have had a lot of problems, and that problem starts, then this corridor will have a problem. But having said that, the saving grace is Italy wants this corridor through Turkey, not Turkey, to Greece. Because Italy का जो energy security है वो through green hydrogen ही होगा. In fact, entire Europe
Correct. If Europe has to have a alternate route of energy away from Russia, it has to be through this corridor. So So basically, sir, it has to be a diplomatic effort to ensure that correct, Turkey is kept on the out of the you know, equation, yeah. right? And What's that? this diplomacy has to work in Europe. It has to work in Middle East also, That's right. So that's right? right. So I So I think think we can take on yeah, the questions. क्योंकि काफी yeah, हो we'll गया take on अब, some questions. Yeah, we'll yeah, take on because questions, and I think there are a lot of questions, I know there are a lot of interest today in this topic, but okay, first take the supers. How much of this unknown gunman assailants is true, and how much 9F is just a social media rumor? If then true, has India changed its behavior oblique stance? We've discussed I it, but you might like to. I just want to say that your guess is as good as my guess. I think that's good enough of an answer for this. See, covert strategies are part of every country's uh, diplomatic or strategies. You take uh, you take United States of America. It has a written paragraph which says that we will take covert actions in the interest of. They've added a word called international peace and harmony. Right? India has not done any such thing. India, in any case, believes in the high table High diplomacy. moral, So uh, high moral high moral ground. ground. High moral ground. So we, in any case, are not advocates of this kind of a strategy. So we leave it at that. I think rest is for the people to guess what they want Yeah, to guess. and we also discussed that this could all be a narrative building by Pakistan And we had to already cover up told you. whatever. We We already had told already you told this. you So बताया था हमने कि कैसे क्या कर सकते हैं. ये कंप्लीट ग्रे जोन वॉरफेयर है जो भी हो रहा है बिल्कुल वहां. बिल्कुल. ठीक है ना? Okay, Lieutenant Singh, you said Pakistan doesn't have money after 9 months, but earlier it was in 60 days or so. Has the situation changed from days to months? No, it's like this. They have a guarantee of 3 billion more. That is why people have estimated it to be about. They have got an assured guarantee that they will get the money from the IMF. Incidentally, read today's article. Uh, Pakistan is the high, highest loan taker of the world today. They have got Yeah. the maximum aid possible from the World Bank and its associated various institutions, right? So they are getting the funds. They are getting funds through their friends and foes or whatever way you want to call it. That is why people are saying that about they can sustain till about 9 months. And I told you the rest of the effort which they are making with their begging bowls going around, 75 to $100 billion is what they are expecting कि उनको मिल जाएगा. So then No, that will we'll see. Even if it comes, even if a little comes out of that, उनका भला हो जाएगा. एंड एंड आप देखो उनका आदत है 22 बार वो ले चुके हैं. वो इसी तरह से रहते हैं. वो ऐसे ही रहते हैं. Yeah, but I think that you answered the question. Let's answer this. General Dushan sir, do you know Urdu reading and writing, or do you read do shairi in Hindi? How good is your Urdu vocabulary? Lucknow is said to be the pinnacle of Urdu in the subcontinent. Oh yeah, you're getting a. JVK, I used to be a poet when I was a kid. तो मैं कविताएं लिखता था, लेकिन उर्दू में नहीं लिखता था, हिंदी में लिखता था, शुद्ध हिंदी में लिखता था. लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही मैं फिर एक डिफेंस स्कूल में चला गया, एयरफोर्स स्कूल में चला गया, फिर उसके बाद वो पूरी हमारी जो वो थी ना, क्या बोलती है, ओरिएंटेशन बदल गई. एंड देन आई बिकेम लेस एंड लेस ऑफ अ पोएट एंड मोर ऑफ अ सोल्जर. बट आई Fauji. स्टिल हैव बच्चा है अभी भी अंदर कहीं, वो कभी कभी उभर के बाहर आ जाता है. बीमारी में ज्यादा बाहर आता है, तो थोड़ा बीमार हूँ इसलिए ये शायरी जल्दी आ गई. No, you made good points. I must say this. Okay. Brian Anderson says, how come Pakistan has the confidence to attack India, whereas India has to think 10 times before attacking Pakistan? I will not give a direct answer to this He's question. got a second part to this also. Why India doesn't do salami slicing to Pakistan and take POK slowly, or at least all the strategic points? ओके, सो इसके बारे में हम मैं डायरेक्ट आपको आंसर नहीं दूंगा कि व्हाई वी डोंट डू इट.
पिछले क्वेश्चन में हमने बताया भी था कि वी टेक अ हाई मॉरल ग्राउंड। इवन जो बालाकोट का जो अटैक हुआ था, हमने बड़ा क्लियरली वो किया था, डिफाइन किया था कि हमने एक टेररिस्ट कैंप को मारा है। We consider that the entire dispute should be settled without a war. That is the way we take it. अगर आप 65 का वॉर भी देखें तो हमने we rarely took each other's territory. We finally actually हाजी पीर हमने कैप्चर किया, but we gave it, and there were some territories which were on our side, we returned it back. तो थोड़ी हमारी जो लोग हमें कितना भी बदनाम करें कि हम डिक्टेटोरियल हैं, हम और इस तरह के देश हैं, आई थिंक इंडिया से बेहतर डेमोक्रेसी कोई है नहीं दुनिया में। मैं हर जगह रह चुका हूँ, कनाडा में भी रह चुका हूँ। कनाडा की मैं बात नहीं करना चाहता हूँ इस समय, लेकिन मैं वहाँ रह चुका हूँ। उस समय रहा हूँ जब वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसके ऊपर द गवर्नमेंट केम वेरी हार्शली देयर। इंडिया इज अ फार बेटर कंट्री। वी हैव अ हाई मॉरल ग्राउंड पॉलिसी एंड वी फॉलो दैट। बट now we are not taking it lying down. If you finger us, we will finger you back. I think that is. Yeah, I think that's the way we look at it. He says, sir, taking those living in POJK and GB as Indian citizen post surgical cutting, won't that be an extremely risky trust karna unpe won't be extremely risky move? Absolutely, absolutely. Yeah, there's no doubt. Trust is something which is the most difficult thing to undertake. Even if you take our internal problems, what happens? Why do we have sometimes casualties within our own security establishment, etc.? There is some kind of a population कभी homogeneous नहीं होती है। पॉपुलेशन में हर तरह के लोग होते हैं, तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस हमको इंस्टीट्यूट करने पड़ेंगे। अगर हम पीओजेके को अगर इंडिया में आता भी है, शामिल भी होता है, तो हम ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली उसको वो कर लेंगे। भाई एक वो वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए कि फ्री फॉर ऑल हो गया और उसके बाद पूरे देश में ये चारों तरफ गदर होगा। वैसी हालत नहीं होगी। आई थिंक देयर इज अ मेथड ऑफ डूइंग बैकग्राउंड चेक्स एटसेट्रा। जो सिटीजनशिप का जो प्रोसेस होता है, दैट विल बी आई थिंक अप्लाइड टू ऑल ऑफ देम एंड देन ओनली दे विल बी ग्रांटेड सिटीजनशिप। ऐसे Yeah. नहीं किसी को आप बोलेंगे कि आप आ जाइए अंदर, दे विल बी No, पुट it's थ्रू right. कैश। It'll be a very complicated affair. इट इज नॉट अ ओवरनाइट अफेयर। देन प्रॉपर वो बनेगी, इसकी टीम्स बनेंगी, कैसे क्या करना है, उसके बाद ही होगा जो कुछ होगा। टिल देन Yeah, दे विल बी कंसीडर्ड एज सम काइंड ऑफ अ क्वारंटाइन, जिसकी बात करते हैं, उस तरह से रहेंगे ये लोग। yeah, I think so. Okay, now it's a small question. I would please give an update on Pakistan Afghanistan situation. वो तो दे दिया. Why did Afghanistan shut down its embassy? That's the thing which I think you could give a little thing on. बेसिकली आई थिंक अभी तक तो जो इंडिया में एम्बेसी थी वो पुरानी गवर्नमेंट की ही चल रही थी, जो मुझे जहाँ तक पता है। फंडिंग बंद हो गई उसकी, Yeah, I तो think it's funding and nothing more. That's the way I फंडिंग look बंद at हो it. गई, उसकी वजह से हुआ। A fragmented Pakistan could pose complex challenges to a world already grappling with instability. Add fanatics, nuclear weapons, and refugee influx. Is there a case for world to prevent it? Possible ways. ये ही इज एब्सोल्युटली राइट। बट जब ये देखिए, कभी भी रेवोल्यूशन होता है ना, तो देयर इज अ स्टेज ऑफ chaos. व्हाट हैपेंड इन यूगोस्लाविया, old Yugoslavia? The only thing which is different from that and this is that they have got nuclear weapons here in Pakistan. So if you can control the nuclear weapons, there are some mechanisms which are already there in place to ensure that the nuclear weapons do not get into the. And in any case, if you see the thing, Punjab remains, Pakistan still remains. It is not disappearing. Pakistan is not disappearing from the scene. In all our balkanization or wherever options which we show, Pakistan remains as part of a existing country. So there would be mechanism. There are mechanisms. We need not tell about it here, whether it is the Yeah, we Americans. don't talk about it. Yeah, we'll not talk about Yeah, it. But fragmentation will definitely have a problem for the world. There will be outflow of people going to all over the country, all over the world, and in India will also not be untouched from it. We have to, like I said, we have to establish our checks and balances and control of influx of these people into our country. yeah, right. PM Modi referred to Balochistan and POK in his 15th August speech in 2016. Recently, the Balochistan PM in exile asked Modi to take up its recognition in the UN. India's likely stand, will China interfere? I think this is a little far away at this point of time.
let things unroll, then we'll talk about it. I've just put it out, this question, not for an answer, that this issue we need to think of. That's about all. Yeah, Okay. Uh, it's a card. respect It's a card whose time will come. will come. If anarchy and chaos escalates, who will take custody of nuclear assets? Right? Yeah, this has just been spoken. There'll be some mechanism which will be worked out. I'm sure someone has got a thing. Yeah. Correct. Okay, then right, alpha, beta. Okay, salute to both of you, generals. There's a famous US Academy map, redraw New Middle East till POK by Ralph Peters and AFJ. Are you aware of it? If yes, what are your thoughts on it? Actually, I have not seen the map, so I may not be able to comment on it. But if you have seen, so you could comment. I have seen this. In fact, he's given 2-3 scenarios in that. कि कब Okay. क्या होगा. But I think this no इसमें क्या है कि he talks of entire Middle East, and that is where this entire thing comes up. It is more West Asia oriented, but I think the time has passed for that. So this has actually Actually, gone over. I he's trying remember to seeing this he's trying to equate it with the Ottoman Empire, so that caliphate, Ottoman Empire and all that. And the caliphate. he's gone, yeah, the caliphate, and he's also taken the Persian, Yeah. civilization into account. He's taken the Though Arabic civilization into account. He's taken a lot of things are involved in that. I've read that. I read about 5-6 years back. I remember, but that has nothing to do with the Pakistan story. Pakistan is the incidental part of it. correct. Okay, okay. Let me, sir, can you share how does during 1980s Khalistani receives gun and how weapons were smuggled internationally, Gujarat-Paki border or Indo-Myanmar border or Indo-Bangladesh border? Look, that's a whole story. We won't go Yeah. back into that at this point of time. I'm Yeah. just highlighting. There are enough books to tell you how it went in, so don't worry about it at this point of And time. and Nothing will happen. and AKs are available all over the world. Yeah, all over the world. Yeah. Okay. Uh, ओके सर न्यूक्स का क्या होगा न्यूक्स का क्या होगा हमने बता दिया सो लेट्स नॉट गेट इन्वॉल्वड इन दिस राइट ओके लेट्स टेक दिस क्वेश्चन इफ sir I see for civil war foresee civil war like situation in POJK why did American ambassador visit there you Okay. know ये एक Uh, riddle है इसके ऊपर तो काफी डिबेट चल रहा है कि यूएस वहां गया क्यों. yeah एंड जहां भी यूएस जाता है, इट हैज सम हिडन मीनिंग बिहाइंड इट. वेदर इट इज टू बेसिकली वो खाली बच्चों से मिला नहीं है. उसके बाद उसने एक हफ्ता वहां रुका भी है. उसने रुका भी है काफी काफी एक्टिविटी करी है, किससे किससे मिला है, कहाँ मिला है. उसी के बाद तुरंत ये सारे एजिटेशन वगैरह शुरू भी हुए हैं. तो there is something going on इसमें ये भी हो सकता है जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये कि यूएस चाइना का कंटेस्टेशन तो है ही है. उसके अलावा ये भी हो सकता है कि इन्वॉल्विंग द चाइनीज इनटू दिस इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो अगर नहीं हो गया तो इंडिया it फिर is इंडिया के लिए it is also to block the Chinese and finger their CPEC because वही but there are a वही lot of angles to this story. So we'll वही see. तो ये कहानी अभी शुरू हुआ है. वही तो कह रहा ये हूँ. क्या है? चाइनीज चाइनीज अगर इन्वॉल्व हो गए तो फिर इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी. फिर तो कहीं ना कहीं अमेरिका इज ऑलवेज हैप्पी बाय मेकिंग टू गाइस फाइट. एक बार कोशिश करी थी उसने गलवान में. यहाँ अगर कुछ ऐसा हो गया तो वी हैव टू बी केयरफुल. आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव Careful. सेड. And ये सिर्फ हम यही बोलेंगे. ये ट्रेलर है मेरे भाई. पिक्चर अभी बाकी है तो. पिक्चर अभी बाकी है. Okay. Thank you for veteran for your valuable contribution. Yeah, thanks a lot. You're welcome. Nuclear terrorist attack. Okay. Okay. Yeah,
Sir, if there is a war, one front, two front, 1.5 front, what do you suggest India should do to ensure availability of ammunition, other war fighting capabilities? Won't we run out of ammunition? Let me tell you, we will not run out of ammunition. Don't worry. Okay, don't worry. Why I'm bringing this is General Murthy, Lieutenant General Murthy, who was a DG Ordnance, and I have done a full video on this called the Military Stamina of India. Okay, and whichever war happens, we worked out the worst scenarios. So you will not run out. For just for your information, the amount of ammunition India can produce, right, is today in my estimate. I have not done this thing. It is back of the envelope kind of an estimate. Is more than what Europe can produce. So don't worry. And you've seen in the past also, whether it was Second World War, the factories of India can do wonders. They're all They there will in do wonder. place. Uh, There were and some shortcomings. I remember when I was dealing with this. yeah, We were able to establish for them also, but even that has now been overcome. 9mm वगैरह yeah. का था तो वो सब हो गया है. Okay. This is Urmila Sethi asking a question after a long time. General Sir, what is the secret of Israel despite having Mossad for extrajudicial assassination? Have USA favorable support? Why not US support for India despite having diaspora? What can we do? Oh, we don't worry too much about it. See, Israel US is a different relationship. India US is a different relationship. So the statements would also be not a ditto of Israel. So let's Yeah. keep it at that. Okay. Right. मुझे ये समझ नहीं आता कि हम पाकिस्तानी के पे डिबेट क्यों करते हैं जबकि हमने डिबेट अपने देश में बने छोटे छोटे पाकिस्तान की करनी चाहिए डोंट आई डोंट थिंक वी शुड गेट इन्वॉल्व दिस राइट ओके आई डोंट सी ओके जगप्रीत Batra, sir, you are at 18,500 subscribers, soon to reach 20,000. Best of luck. Thank you. Thanks a lot. Okay. Yeah, this is an interesting question. Will the Saudis avoid investment into Pakistan if they get security promises from America? Is it better for them to achieve food security through Pakistan? See, there are 2-3 angles to it, sir, as far as Saudi Arabia-Pakistan relationship is concerned. Uh, First of all, in heart of heart, Saudi Arabia, as of now, is distancing itself from Pakistan. If you remember, Anwarul Haq, coming from the UN General Yeah, Assembly, wanted to land at Saudi Arabia he for was not allowed. he was not allowed. Later on, he said, "I want to pray for the peace and peace of Pakistan." So then he was allowed to land. He went and did his prayers, and then he was told to get back. That is the one aspect. But at the same time, I mean, Pakistan is considered as the Islamic world's only country with that big bada Nuclear bomb, weapon. nuclear weapon. So therefore, Saudi Arabia, whether he wants to buy it, whether it has already taken it, or whatever be the case, there is some amount of support which Saudi Arabia will continue to give to Pakistan to ensure that that particular aspect is there with him and in his control and not in control of somebody else as far as the Yeah, Middle East is concerned. So Saudi Arabia will continue to bail out Pakistan because of that factor. And you may never know, there could be a transfer of technology later on quietly done. If Iran can do it, why not Saudi Arabia? Because you see, for Saudi Arabia, Iran is a bigger challenge. problem. If Iran gets a nuclear weapon, then definitely Saudi Arabia will be worried. Is America is not going to give it nuclear weapon. If any country which can give technology or something like that, it will be Pakistan. So Saudi Arabia will continue to. I think that's more than enough. Yeah, and one more issue about food security मैं बताना चाहता हूँ. Yeah. 5-6 years back, Pakistan was a food surplus nation. Abhi it is Wheat itself a food deficient nation. It's a wheat net बाउल food था, importer. अब खत्म हो Gone. गया उसका. खत्म हो गया. So पाकिस्तान के पास तो उनके खुद के खाने के लिए है ही नहीं. Right. अभी So इनफैक्ट अभी सर अभी एक जो मैं पढ़ रहा था इसके बारे में फूड सिक्योरिटी से आपने बात छेड़ दी है.
it came to my mind. Pakistan is now trying to give its land to these people Yeah, and say but that that's fact. you come there, produce like a mass production, not as छोटे छोटे टुकड़े में. You know our area, how we have No, our. no, yeah, it might not be that easy for them to get away with it, because even if you give land, what do you do with your own people? उनको That भी is तो what I'm खाना saying. खिलाना चाहिए. So that हाँ. is what I'm saying कि उसमें अभी इनके आदमी काम करेंगे, वेजेस पे काम करेंगे. पाकिस्तानीज विल बिकम व्हाट दे आर इन दुबई, वो और सऊदी अरेबिया वही काम हो यहाँ करने लग जाएंगे इनके नीचे. सो दैट इज द डिलेमा व्हिच पाकिस्तान विल हैव टू थिंक ऑफ. Yeah, it's not so easy. है तो अभी बातों बातों हो रहा है कि कैसे होगा, क्यों होगा, it's all right. We'll okay. So I think we've done for the day today. I think And right, my last thing is, if you like this channel, please subscribe. I would like Jagdeep Batra has said, absolutely, Jagpreet, absolutely. right? Please kindly subscribe. Also subscribe to Strive EP, right? Strive is General Dushan's channel. I maintain in India आपको दो ही strategic channel मिलेंगे, एक Gunner Shot और दूसरा Strive. Let me put it the other way around. Strive first and Gunner Shot later. जिस तरीके से आप बात करना चाहते हो. You, Because you the are the rest, you are the the guru. rest, नहीं नहीं गुरु की बात नहीं है. The rest are not professional channels. Okay, I do know a lot of people who appear on my channel and on General Dushan's channel go and speak on other channels, but the quality of discussion in those channels will never be up to the mark, because the discussion is not between two professionals there. दैट्स द थिंग. ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि आप दूसरे बीच में दखलंदाज कर देते हो. ये नहीं, मैं दखलंदाज नहीं करता हूँ. आई हाईलाइट अ पॉइंट और स्टॉप अ पॉइंट, डिफ्लेक्ट अ पॉइंट टू द प्लेस वेयर इट इज सपोज्ड टू गो. Yeah, that is ओके, सो told दैट यू about, गेट. that is told about my channel also. That is told या about या this. हाँ, ये दिस इज द वे प्रोफेशनल डिस्कशन गोes. Correct. Okay, professional discussion happens through a little bit of disagreement, right? Disagreement, And and it is it's a dialogue. I mean, we should remember it's a dialogue. dialogue. It's not an Dialogue. anchor guest show. It's a Yeah, dialogue. I am. Yeah, it's a dialogue. And मैं ये भी बताना चाहता हूँ, when I make a topic with anyone, I don't make it कि आज सवेरे फोन करो और शाम को कर लो. हम एक हफ्ता 10 दिन पहले हम बात करते हैं कि भाई आपके पास टाइम है, ये कवर कीजिए, एंड उसके बाद मैं पढ़ता हूँ. So when I come here, I'm at least 25 to 30% knowledge I have of what he's going to speak. Okay, so please understand, this is never interfering, never talking over each other. Aap log, if you're used to that other kinds of talk, here you see debate. This is a debate which is happening. It's not a debate and a discussion, right? Correct. And last but not the least, thanks Venki, you're appearing after a long time. I was expecting for a long time your comments, because I've always seen that you give good comments, right? And JBJP says Strive is a great channel. I agree with him. There's no doubt about it, because you get a lot of alternate views on Strive. I know all of them who are talking. So that's, I think, where we end today's evening's discussion. I thought it was a great discussion. We must thank General Dushan for Thank opening you, up sir. so many avenues and so many angles of what Pakistan is up to. ये Thank you, कभी sir. नहीं सोचना चाहिए हमें कि पाकिस्तान मर रहा है, ये है, वो कुछ भी हो रहा है, उनका एंटी इंडिया फोकस कभी जाएगा नहीं. इसी के साथ आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड टुडे एंड हैव आस्क्ड सम वेरी गुड क्वेश्चंस which tickled our brains, right? Thanks a lot. Good evening and Jai Hind. Jai Hind, sir. Thank you, sir. Jai Hind.